Hi, all of you. Today we are going to start with the balance sheet. And in our last session, we have discussed some points related to the balance sheet. Today, uh, we are going to discuss about the meaning of balance sheet. What is meant by balance sheet? So, balance sheet is a statement showing the financial position of a business at a point of time. बैलेंस शीट होता क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जो फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाती है आपके बिजनेस का एक पॉइंट ऑफ टाइम पर. सो व्हाट मीन बाय द पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स इट मे बी 31 दिसंबर और 31 मार्च. इंडिया में जो अकाउंटिंग फॉलो होता है वो 31 मार्च होता है, और जो यूएस है, यूएस और बाकी कंट्रीज़ में है वो आपका 31 दिसंबर को क्लोज होते हैं अकाउंट्स. So as we discuss on a last class about the liabilities and assets, liabilities is bifurcated into three parts like capital, non-current liability, and current liability. So and non-current assets is bifurcated into two parts, and assets is bifurcated into two parts: non-current assets and current assets. So we are going to discuss it again. लाइक वी हैव अ कैपिटल. कैपिटल के बढ़ने की दो वजह होती है आपकी: प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल, और दो ही वजह होती है घटने की, लाइक लॉस एंड ड्राइंग्स. एज वी डिस्कस ऑन द लास्ट क्लास, नॉन करंट लायबिलिटी आपकी, नॉन करंट लायबिलिटी में आता है आपका डेवेंचर एंड बैंक लोन. डेवेंचर क्या होता है? जब पब्लिक से कंपनी पैसा लेती है उधार पर. when a company taken a loan from the public and issue a certificate, that is called debenture. इसको debenture को हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र. if the company taken a loan from the bank, so it will be considered as a bank loan. अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स पे बैक अमाउंट, अगर आपको एक साल के बाद देना है तो इट विल बी कंसिडर अंडर दी नॉन करंट लायबिलिटीज़. और अगर आपको एक साल के अंदर अंदर चुकाना पड़ेगा पैसा तो आएगा आपका करंट लायबिलिटीज़ में. अब करंट लायबिलिटीज़ में आता है आपका बैंक लोन. अगर आपने, इफ़ यू आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक विच इज़ लेस देन 1 ईयर और इक्वल टू 1 ईयर, देन इट इज़ अ बैंक ओवरड्राफ्ट. फिर आता है आपका वाई वी आर शोइंग द कैपिटल अंडर द लायबिलिटी साइड, बिकॉज ओनर ओनर का ही तो पैसा है, तो वाई वी आर शोइंग अंडर द लायबिलिटी साइड. Because according to separate business entity concept, as we discussed on the last class, that according to separate business entity concept, both business and owner are separate from each other. दोनों अलग अलग हैं. जिस दिन ये बिजनेस बंद होगा उस दिन ये पैसा चुका के जाना पड़ेगा बिजनेस को. ये मालिक का पैसा आपको देना पड़ेगा. ये आपका मालिक का पैसा हो या बाहर वालों का पैसा हो, सारा ही आपको चुकाना पड़ेगा. इसलिए आपका जो डेबिट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑलवेज भी इक्वल होता है. सो आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ एन एसेट्स. लाइक वी हैव अ नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट में क्या होता है? आपका बाइफरकेट होता है. लाइक फिक्स एसेट में आता है आपका मशीनरी, फर्नीचर, टाइपराइटर, मोटर व्हीकल. एंड इंटेंजिबल एसेट्स आती हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट आता है आपका. दीज आर दी एसेट्स विच हैज़ अ लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर. अगर आपका लाइफ एक साल से ज़्यादा का है तो आपका नॉन करंट एसेट्स में आएगा. इफ़ एन एसेट हैज़ अ लाइफ 1 ईयर और इक्वल टू 1 ईयर, then it is covered under the current assets. Like we have a stock, debtors, cash and cash equivalent. पैसा या पैसे के बराबर है तो आएगा आपका करंट एसेट्स में. फिर आता है आपका एक्सपेंस. अगर एक्सपेंस एंड इनकम के बारे में,
कि ये भी हम लोग अपना बैलेंस शीट में शो करते हैं। इफ़ वी हैव नॉट पेड एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, अगर आपने काम तो कराया मगर पैसा नहीं दिया, तो आप से आपका देना बनता है पैसा, तो वो आपकी लायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, इफ यू आर टेकन अ सर्विसेज फ्रॉम योर एम्प्लॉयज और अ वर्कर, देन यू हैव टू पे दैट मनी to your employees or workers, otherwise they will switch the job. So ये आपका आएगा करंट लाइबिलिटीज में। फिर आता है आपका इनकम। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इनकम रिसीव हुआ है एडवांस में, इफ़ यू आर रिसीविंग एन इनकम इन एडवांस, देन इट विल बी कंसिडर एज अ लाइबिलिटी, लाइक एडवांस रेंट रिसीव्ड, एडवांस कमीशन रिसीव्ड। फिर इधर आता है आपका एक्सपेंस पेड इन एडवांस। अगर आपने टाइम से पहले पे कर दिया और आपने टाइम पर पे नहीं किया, तो आपका बनेगा लायबिलिटी, और टाइम से पहले पे कर दिया, वी आर गिविंग एक्सपेंस इन एडवांस लाइक एडवांस सैलरी, एडवांस वेजेस, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ करंट एसेट्स। और अगर इफ यू आर इन केस ऑफ इनकम, इन केस ऑफ इनकम आपने काम किया मगर आपका को पैसा नहीं मिला, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट्स लाइक एक्रूड रेंट रिसीव्ड, एक्रूड कमीशन रिसीव्ड। इस ये आपके राइट्स हैं जो आपका सामने आपने किया है दूसरे वालों के लिए, लेकिन उनसे पैसा लेना बाकी है। लाइक आपने कमरा चढ़ाया हुआ है किराए पे, इफ़ यू आर गिविंग अ हाउस in a rent, so it will be considered as a income. And if you are not receiving the income, then it will be considered as an assets like accrued rent. So in a nutshell we can say that our all the assets and liabilities will be always be equal. I am giving an example, like if we are receiving 1 lakh rupees from the owner, then it will be showing under the cash side, cash and cash equivalent 1 lakh। अगर मालिक देता पैसा तो वो पैसे में आएगा, साथ साथ में कैपिटल में आएगा कि जिस दिन हमको बंद करना है बिजनेस, उस दिन हमको 1 लाख रुपए मालिक को लौटाना पड़ेगा। आफ्टर दैट इफ यू हैव परचेज्ड रुपीज 50,000, stock of rupees 50,000, then it will be shown under the inventory side, stock side, then our balance always be equal. After some period of time, if we have purchased motor vehicle of rupees 25,000, then it will be shown under the vehicle rupees 25,000 and it will be deducted from the cash side. uh, I am giving you a more example, like if we have issued loan of rupees 5 lakh, then we will receive 5 lakh in cash and it will be shown under the cash and cash equivalent. So our balance after issue the debenture also will be equal. it बैलेंस शीट का बैलेंस आपका हरदम इक्वल रहेगा, अनइक्वल हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल इफ यू आर if you are taken if we taken a loan like less than 1 year, rupees 15,000, then it will be show under the bank overdraft and it will be shown under the cash and cash equivalent 15,000, or we can say bank also it.
If we see, there is a balance, total balance, that is 6,15,000. it, it it is never be unequal. I am going to give you a more example, like if we paid a salary in advance, like we have given a salary rupees 10,000 to our employees, then it will deduct from the cash side and it will be shown under the advance salary side. Same example of an advance wages, like if we have given if we give wages to our to the worker rupees 6,000, then it will be deducted from the cash and cash equivalent, or we can say bank, and it will be shown under the advance wages. So I hope today's session is more sufficient and helpful for you guys. Thanks for watching my videos.